Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to Study Hub. Today is our lecture number 6 of Financial Accounting MCQs based lecture series. So before we start the video, please subscribe the channel and press the bell icon that you will get latest updates from our future videos as well. So without any further discussion, without any further delay, let's start our today's topic. So let's get started. MCQs number 1 है हमारे पास, what is residual value? The residual value, also known as slavage value, is the estimated value of a fixed asset at the end of its lease term or useful life. Whereas residual value fixed asset की वो value होती है कि जब उसकी life ख़त्म होने के बाद जो उसकी end में value एक हम कैलकुलेट करते हैं, that is residual value. Next MCQs है हमारे पास, what is book value? Book value indicates an asset's value that is recognized on the balance sheet. Essentially, book value is the original cost of an asset minus any depreciation, amortization or impairment cost. Whereas book value indicates the asset value that recognized on the balance sheet, और एक ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स माइनस करते हैं हम इसमें से डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और एनी अदर इम्पेयरमेंट कॉस्ट को, तो ये हमारे पास बुक वैल्यू आती है व्यूअर्स. नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट decreases over time due to use, wear and tear or obsolescence. This decrease is measured as depreciation. Description: depreciation, that is a decrease in assets value, may be caused by a number of other factors as well, such as unfavorable market conditions, etc. Whereas depreciation मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट्स है कि जो कि एसेट के यूज़ होने के साथ साथ ओवर द टाइम यूजेज ऑफ वियर एंड टीयर और ऑब्सोलेंस की वजह से जो उसकी वैल्यू में डिक्रीज आता है, दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन. और अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन को देखते हैं तो डेप्रिसिएशन, दैट इज़ अ डिक्रीज इन एन एसेट्स वैल्यू मे बी काज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स एज वेल एज अनफेवरेबल मार्केट वैल्यूज और विद द यूजेज ऑफ टाइम विद द वियर एंड टीयर. सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट आर डेप्रिसिएशन मेथड्स? We have 4 important depreciation methods. Number first is straight line method. Number second is double declining method or diminishing balance method भी इसको कहते हैं. Number third is units of production and number 4 is sum of years. So years. Next MCQs है हमारे पास, what is bond? A bond is a fixed income investment that represents a loan made by an investor to a borrower, यूजली कॉर्पोरेट और गवर्नमेंटल. व्यूअर्स, बॉन्ड जो है एक फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट दैट रिप्रेजेंट्स अ लोन, एक लोन है जो कि कर्जा है मेड बाय इन्वेस्टर टू अ बारवर, यूजली कॉर्पोरेट और गवर्नमेंटल, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट इज डिबेंचर? A debenture is a type of debt instrument that is not backed by any collateral and usually has a term greater than 10 years. Whereas debenture is a debt instrument है और ये बैक नहीं होता किसी भी collateral and usually has a term जो होती है इसकी greater than 10 years की होती है, तो that is debenture which is debt instrument. नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट इज अमोर्टाइजेशन? अमोर्टाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीमेंटली चार्जिंग द कॉस्ट ऑफ एन एसेट टू एक्सपेंस ओवर इट्स एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ यूज. व्यूअर्स, अमोर्टाइजेशन जो है इंटेंजिबल एसेट्स की होती है, जैसा कि टेंजिबल एसेट्स की हम डेप्रिसिएशन करते हैं उनके विद द यूज ऑफ टाइम के साथ जो वियर एंड टियर होती है, उसी तरह जो है इंटेंजिबल एसेट्स जो लाइक गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, इनकी अमोर्टाइजेशन होती है. और अमोर्टाइजेशन एक प्रोसेस है कि उनकी कॉस्ट को हम असेस करते हैं. और नेक्स्ट जो है हमारे पास एमसीक्यूज विच इज़ व्हाट इज़ कैपिटल? द कैपिटल मीन्स द एसेट्स एंड कैश इन अ बिजनेस. Capital may either be cash, machinery, receivables, accounts, property or house. Capital may also reflect the capital gained in a business or the assets of the owner in a company. Next MCQs हैं व्यूअर्स हमारे पास, what are the types of capital? The 4 major types of capital including working capital, debt, equity and trading capital.
trading capital is used by brokerages and other financial institutions. So viewers, ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एमसीक्यूज बेस्ड लेक्चर सीरीज। हम वाइंड अप करते हैं आज के इस लेक्चर को यहाँ पर, और इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 में हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर इसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। कैपिटल्स को, पेड अप कैपिटल्स को स्टडी करेंगे, उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स जो हैं कैपिटल्स की, इनको डेप्थ में स्टडी करेंगे। सो व्यूअर्स, वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को इस उम्मीद के साथ कि अगर इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया है तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि फ्यूचर से रिलेटेड तमाम आने वाली वीडियोस टाइमली आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।